अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that what is the purpose behind फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड इसके बाद हम फ्रीडम ऑफ प्रेस के जो केसेस हैं अंडर आर्टिकल 19 इनको एग्जामिन करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं पर्पस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हियर वी हैव द केस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हमको चार पर्पस के बारे में बताया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हेल्प्स अस टू अटेन सेल्फ फुलफिलमेंट। इसके बाद यू कैन राइट दैट इट असिस्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ्स। इसके बाद यू कैन राइट दैट इट strengthens the decision making ability of individuals. इसके बाद you can write that it provides us a mechanism to establish balance between stability and चेंज। तो ये पर्पस आपको याद रखने हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसके बाद हम आते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के केसेस के ऊपर। हमको पता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास वेरियस केसेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द केस ऑफ Sakal Papers Limited versus Union of India. अब in this particular case, government ने एक rule निकाला था। Government made a new rule that you can increase the prices of the newspapers. You can increase the prices of the newspapers only if you increase the number of pages. You increase the number of pages in the newspaper. अब in this particular case, Supreme Court held that this order of the government is unconstitutional and is violative of Article 19, Clause 1A of Indian Constitution. It was also held that this control of prices is not a reasonable restriction अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल निकाल नहीं सकती है कि जो न्यूज़पेपर का प्राइस है या तभी बढ़ा सकते हो इफ यू हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस इन द न्यूज़पेपर। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इन दिस केस गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर that a newspaper can publish a maximum of 10 pages. यानी एक न्यूज़पेपर सिर्फ मैक्सिमम 10 पेजेस ही पब्लिश कर सकता है। अब दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट was held to be violative of Article 19 Clause 1 Clause A of Indian Constitution. अब इसके बाद वी हैव द केस ऑफ ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। अब इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट प्री सेंसरशिप ऑफ जर्नल इज अगेंस्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जर्नल की प्री सेंसरशिप नहीं हो सकती है। अब इसके बाद वी हैव द केस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया versus Bharat Kumar. अब in this case, it was held that forceful buns will be against Article 19 Clause 1 Clause A of Indian Constitution. यानी जो आप देखते होगे कि आज भारत बंद हो जाएगा,
एंड अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो अपनी दुकान बंद करने के लिए, इट विल बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसके बाद वी हैव द केस ऑफ हरीश uppal versus Union of India. अब in this case, it was held that lawyer strike will be against Article 19, Clause 1, Clause A of Indian Constitution. And here the lawyers must compensate. Lawyers must compensate to their clients for the loss of the client. अब इसके बाद we have the case of Kameshwar versus State of Bihar. अब in this case, it was held that demonstrations are protected. Demonstrations are protected under Article 19, Clause 1, Clause B. But they must be peaceful. यानी अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो ये आपको अलाउड है, लेकिन ये प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए. ओनली देन इट विल बी अलाउड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 3. अब इसके बाद हम राइट टू इंफॉर्मेशन के भी कुछ केसेस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. अब in this case, it was held by the Supreme Court. It was held by the Supreme Court that the citizens have the right to know about their candidates. Citizens have the right to know about their candidates for whom they will be voting. They have the right to know about the criminal background. Educational qualifications, as well as about the assets of the candidate for whom they will be voting in the elections. यानी अभी आप जो इलेक्शन में देखते हो कैंडिडेट्स को अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, अपनी सोशल बैकग्राउंड की डिटेल्स हैं, ये डिक्लेयर करनी पड़ती हैं. एंड साथ ही इनको एसेट्स के बारे में भी बताना होता है. ये जो रूल था इट वॉज नॉट देयर अर्लियर. पहले ये रूल नहीं होता था, पहले डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं होती थी. बट इस केस में बोला गया था that the candidates must declare these things. अब इसके बाद Parliament declared a notification where it was said that only elected representatives must declare their details. यानी हर कैंडिडेट को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे. अब दिस वाज नॉट कंप्लीट कंप्लायंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एंड दैट इज व्हाई इन द केस ऑफ PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट expressed disappointment for the contempt of its judgment in the case of Union of India versus Association of Democratic Reforms, and called the parliament to fully implement the guidelines of the case of Union of India versus Association for Democratic Reforms. And after that, Parliament made amendments in the People's Representative Act, and now it is mandatory for the candidates to declare their complete biodata before they contest elections. अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है, that whether commercial advertisements are covered under Article 19 Clause 1 Clause A or not. यानी जो आप टीवी में एड्स देखते हो इनको भी आर्टिकल 19 में कवर किया जाता है या फिर नहीं जाता है. अब here we have the case of हमदर्द
Davakhana. In this case, it was held that commercial advertisements are not covered under Article 19, Clause 1, Clause A of Indian Constitution. But later on, in the case of Tata Press versus MTNL, it was declared by the court that commercial advertisements enjoy protection under Article 19 Clause 1 Clause A of Indian Constitution. तो जो आप टीवी एड्स देखते हो या प्रिंट मीडिया में आप एड्स देखते हो, these enjoy protection under Article 19 Clause 1 Clause A of Indian Constitution.